Yeah, hello students. How are you? I hope you all are well. Students, today we will learn chapter number 13 and the chapter name is Visualizing Solid Shapes. Chapter name is Visualizing Solid Shape. Now class, let's start the chapter. That in our daily life we use many 3D objects. They also are very useful और हमारे लिए class वो क्या होते हैं बहुत useful होते हैं. Class C, the shape of a road roller is cylindrical. Class इसकी shape क्या है? वो roll कर रहा है. उसकी road की जो shape है उसकी cylindrical. तभी तो उसका surface कैसा है class? Plane surface है. It is used to press and plane the surface. class उसको surface कैसा है उसका plane. तो वो जो plane करेगा उस surface को क्या करता है? Plane करता है. Okay. Now the shape of a room is a cuboidal. क्लास कैसी है इसकी क्यूबॉइडल रूम की शेप है. ओके क्लास यू कैन सी किस क्या है इसकी शेप क्यूबॉइडल. द शेप ऑफ अ डबल बेड एंड अलमीरा आर आल्सो क्यूबॉइडल सो दे आर स्टेबल एट देयर प्लेस इन द रूम. क्लास इसकी वजह से क्लास क्या है वो स्टेबल है. अंडरस्टैंड. So dimension represent a measurement in space. For example, the height, width, length of something. A straight line has no one dimension. Class कितना होता है उसका dimension one होता है. Length, a rectangle has two dimension, length and width, and a matchbox has three dimension, length, width and height. Here the rectangle is a 2D shape while the matchbox is 3D shape. Most of the 3D objects can be give 2D shapes. Now class come on introduction. A solid is any enclosed three-dimensional shape, that is it has three dimensions, length, breadth and height. We have already learned about 3D shapes in earlier classes. Let us revise all important terms related to them in brief. Now class shapes. नंबर ऑफ एजेस क्लास ये क्या है क्यूबॉइड. सो क्लास टू होती है और नंबर ऑफ वर्टिसाइज 6 और नंबर ऑफ वर्टिसेस 8 और फेसेस कितने होते हैं 6. नाउ क्लास ये क्या पढ़ा था हमने क्यूब के बारे में. नाउ क्लास कम ऑन क्यूबॉइड. क्यूबॉइड 12 8 एंड 6 रेक्टेंगल सिलेंड्रिकल 2 और क्लास इसमें क्या होता है एक भी वर्टिसेस नहीं होता सिलेंड्रिकल में. 2 फ्लैट एंड 1 कर्व सरफेस. कौन 1 फ्लैट सरफेस. नाउ स्फेयर में नील कुछ नहीं होता 1 कर्व सरफेस होता है क्लास बस उसका. नाउ ट्रायंगुलर प्रिज्म में 9 6 और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस लेटरल फेसेस एंड 2 ट्रायंगुलर फेसेस. नाउ रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्लास 12 8 और 6 क्या होते हैं उसके 6 रेक्टेंगल फेसेस होते हैं. नाउ ट्रायंगुलर पिरामिड 6 4 और अगेन उसके फेसेस होते हैं 4 वर्टिसेस होते हैं. ओके क्लास और एजेस होती हैं उसकी 6. Come on exercise 13.1 question number 1. Identify the following shapes and write the name of the solid it represents before each picture. Class यहाँ पर आप देख सकते हैं. क्लास ये क्या है ये अलमीरा है और हमसे उसने पूछा नेम ऑफ द सॉलिड. सो क्लास अलमीरा किसकी बनी हुई है क्यूबॉइड. ओके क्लास और ये बॉल है इसका जो वो है ये है स्फेयर. अंडरस्टैंड क्लास. और ये बॉटल क्लास सिलेंडर. Okay. Now class rest of the parts do yourself. Come on question number 2. Fill in the blanks. A cube has dash faces and dash edges. Class मैं आपको cube पे लेकर जाती हूँ. कितने faces होते हैं 6 और edges कितनी होती है 12. Okay class. 6 faces and 12 edges. Now class a cone has dash vertex and dash edges. Cone class अब हमने cone का पढ़ा था. 1 vertex and 1 edges. Understand class? Okay class, rest of the parts do yourself. Come on. Next for building 3D shapes. Class 3D shapes के लिए जो हम nets का use करते हैं. Net of a 3-dimensional figure is a shape that can be cut out of a paper or cardboard and folded to make a 3D shape. Class उसको हम cut करके क्या बनाते हैं fold कर देते हैं क्या बना देते हैं 3D shape बना देते हैं. Now class in fact nets are 2-dimensional patterns of 3 dimensional figure. They help us to see the region or faces that make up the surface of the figure. Now net of a cuboid we may have more than one net for the same cuboid. Below is given another net of the above cuboid when folded along the dotted lines. Class हम उसको fold करेंगे shell
give the same cuboid as above. Understand? Now class, when we fold this net along the dotted lines, we get a cuboid. Class, हम उसको अगर हम उसको फोल्ड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक क्यूबॉइड की शेप बन जाएगी. Now net of a cylinder when we roll AB, AB को हम क्लास रोल करते हैं CD की तरफ to make a cylinder. Okay, तो क्लास क्या बन जाएगा, हमारा एक सिलेंडर बन जाएगा. Now net of a right prism when folded along the dotted lines, class उसको हम fold कर देते हैं along the dotted lines, the given net will form a right prism like the one shown alongside. Understand? Yes class, come on exercise 13.2. Question number 1, match the shapes with their nets class. अब क्लास हमें उनके नेट्स के साथ उसको मैच करना है क्लास सी. ओके, अब क्लास ये क्या है, अब हम इसको किससे मैच करेंगे, दैट इज क्लास दिस. नाउ कम ऑन, क्यूबॉइड की जो शेप है वो लाइक दिस. नाउ दिस इज द prism and this is cylinder for this. Understand class? Now class, come on question number, yes, come on class, question number 2, from cubes from the following nets. class हम उसको क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब क्लास हम उसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे. ओके क्लास, अब इसको हम फोल्ड करेंगे एंड देन हम उसको फोल्ड आउट करके हम इसको किस में कन्वर्ट करना है, क्यूब में कन्वर्ट करना है. ओके क्लास, कम ऑन क्वेश्चन नंबर 3, फॉर्म क्यूबॉइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग नेट्स. यस क्लास, हमें इस फॉलोइंग नेट से क्या बनाना है, क्यूबॉइड बनाना है. तो क्लास हम उसको पहले हम एक रेक्टेंगल्स को फाइंड करेंगे, देन हम अपने क्यूबॉइड को फाइंड करेंगे and make कर देंगे. Understand class? Rest of the part do yourself. Come on, techniques of drawing solid shape. Come on class, the following two techniques are commonly used to drawing solid shapes. Class, first technique क्या है, isometric dot paper, और दूसरी है हमारी use of graph paper. Okay class, now use of isometric dot paper पहले हम देखते हैं. Now class, it is simple to draw two dimensional object on a paper as it has two dimensional head, height और class क्या है, width. बट ऑब्जेक्ट्स इन रियल लाइफ हैव अ थर्ड डायमेंशन. प्लस रियल लाइफ में क्या होता है क्लास, थर्ड डायमेंशन होता है. वो तो एक पेपर की बात कर रहे थे हम. आप क्लास रियल लाइफ में थर्ड डायमेंशन डेप्थ विद नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेड इन द ड्राइंग. In isometric drawings, all three dimensions are represented in paper. Isometric graph paper, 3D graph paper is a triangular graph paper with dots forming a 60-degree grid of small triangles. Example, draw the solid using the top, side and front views given below. क्लास टॉप ये हो गया हमारा, साइड हो गया, फ्रंट ये हो गया. तो क्लास स्टेप 1, यूज द टॉप व्यू, ड्रॉ द बेस ऑफ द 8x3 रेक्टेंगल. क्लास सी, ये क्या हो गया हमारा, टॉप हो गया. नाउ स्टेप 2, ऐड एजेस टू मेक द बेस ऑफ अ सॉलिड फिगर. क्लास सी, अब उन्होंने उस एजेस को क्या कर दिया, ऐड कर दिया. नाउ यूज ऑफ ग्राफ पेपर. Like isometric dot paper, we can use a square paper to draw solid figures. Example, draw a rectangular prism with length 5 units, height 2 units and width 3 units. Use a square graph paper for the drawing. Class, draw a parallelogram with sides 5 units and 3 units. Class, हम पहले क्या करेंगे, parallelogram को draw करेंगे like this. Then this is the top of the prism. ये क्या है क्लास, top है. Now start at one vertex. Okay. Draw a line passing through two squares. Repeat it for other three vertices. Repeat करेंगे हम उसको. Draw the hidden edges and dashes line. Class, hidden edges. हमने उसको dash the edges किया and connect the ends of line to complete the prism. अब क्लास उसको हमने connect कर दिया. ये क्या है हमारा, hidden edges है. Come on, exercise 13.3, question number 1. Draw an isometric sketch of cuboid of dimension 3 into 2. 4 into 3 into 2. प्लस यहाँ पर हमने देखो आइसोमेट्रिक पेपर से इसको बनाया था. तो क्लास, यस क्लास, हमें उसका डायमेंशन क्या रखना है, 3 2 4 या 4 3 2. क्लास, अब आप यहाँ पर इसको ड्रॉ कर सकते हैं. हमें क्यूबॉइड को इसमें ड्रॉ करना है लाइक दिस. नाउ क्लास, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 2 और 4, जिनके डायमेंशन को लिख सकते हैं. Now come on question number 2, draw an isometric sketch of a cube of dimension 4 units. क्लास, उसकी यूनिट्स को हम 4 में रखेंगे, हमें क्यूब को फॉर्म करना है. अंडरस्टैंड क्लास, 3 यूनिट्स, 4 यूनिट, 4 यूनिट और 4 यूनिट. अंडरस्टैंड क्लास? Rest of the questions do yourself.
Now class, your chapter is completed. Prepare it very well and